Before we understand Ma Tara, we must first understand Sak Tantra. Today, whenever people hear the word Tantra, they immediately think about mysterious black magic, occult practices, और supernatural powers. लेकिन क्लासिकल साक्त तंत्र इन सबसे काफी अलग है. At its core, साक तंत्र is a philosophy of consciousness and energy. साक वर्ड शक्ति से आता है और यहाँ शक्ति का मतलब है सिर्फ एक गॉडेस नहीं बल्कि primordial cosmic energy है. According to साक philosophy, nothing is the universe exist without शक्ति. Creation, movement, thought, transformation. Everything is an expression of divine energy. Tantra explains Shiva as a pure consciousness, while Shakti is the dynamic power that allows consciousness to manifest itself. Or consciousness without energy remains still. Energy without consciousness remains directionless. इसलिए शिव और शक्ति को दो अलग रियलिटीज नहीं बल्कि वन इनसेपरेबल कॉस्मिक प्रिंसिपल माना जाता है. द अल्टीमेट गोल ऑफ शाक्त तंत्र इज नॉट सिंपली वर्शिप, इट्स अ गोल इज द अवेकनिंग ऑफ consciousness through Shakti. Within this tradition emerged one of Tantra's most profound teachings, the Dasha Mahavidyas. These are known as the 10 great wisdom goddess, each revealing a different dimension of divine wisdom. कई modern scholars इन महाविद्याओं को symbolic maps और human consciousness के रूप में भी इंटरप्रेटेट करते हैं, जबकि ट्रेडिशनल शाक्त रिलीजन्स उन्हें डिवाइन मदर के रियल मैनिफेस्टेशन मानते हैं. दोनों पर्सपेक्टिव तंत्र को समझने के अलग अलग अप्रोचेस हैं. Among the 10 महाविद्यास, माँ तारा is recognized as the second महाविद्या. She represents wisdom, compassion, protection, scared knowledge and inner guidance. If Mahakali symbolizes the power that dissolves illusion, then माँ तारा represents the wisdom that guides us after illusion has disappeared. The name Tara comes from the Sanskrit root tar, meaning to cross. But Tantra asks an important question. Cross what? Not a river, not an ocean, but fear, ignorance, attachment and the limitation of the human mind. इसलिए माँ तारा को she who carries consciousness beyond ignorance कहा जाता है. Historically, माँ तारा worshipped within the Shaktantra, Shakt तांत्रिक tradition of Eastern India, especially in Bengal, Assam, Odisha और बिहार के कुछ हिस्सों. Over time, Tara also become one of the central figures of Vajrayana बुद्धिज्म और एट्रो हिंदू तंत्र और बुद्धिस्ट तंत्र तारा को डिफरेंट थियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स में एक्सप्लेन करते हैं. बोथ ट्रेडिशंस एग्री ऑन वन आइडिया. तारा इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ विजडम एंड कंपैशन. अकॉर्डिंग टू सर्वर तांत्रिक टेक्स्ट, तारा इज डीपली कनेक्टेड विद द वाक, नडा एंड मंत्र. वाक यानी स्केयर्ड स्पीच, नडा यानी primordial sound and mantra. Tantra believe before form there was vibration, before language there was sound, before sound there was silence. और माँ तारा उस साइलेंस और साउंड के बीच की विजडम को सिंबलाइज करती हैं और उसीलिए वो मानी जाती है. She remind us that words are never just words. Every word carries intention. Every vibration shapes consciousness and sometimes silence becomes the highest form of knowledge. From a tantric perspective, Tara sadhana is not merely about changing mantras, it is about transforming the practitioner fear into awareness, confusion into clarity, reaction into consciousness. Traditional tantric practitioners often performed their practice in forests, riverbanks, mountains and cremation grounds. ये जगह इसलिए चूज नहीं की जाती क्योंकि ये मैजिकल थी. दे वर चूजन बिकॉज दे रिमूव्ड कंफर्ट, डिस्ट्रक्शन एंड अटैचमेंट. तंत्र कहता है जब आउटर नॉइज खत्म होता है तब इनर कॉन्शियसनेस बोलना शुरू करती है. फ्रॉम अ सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव, माँ तारा कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज द इनर गाइड. लाइफ में एक मोमेंट आता है व्हेन लॉजिक फेल्स, आइडेंटिटी कोलैप्स एंड कोई एक्सटर्नल आंसर काम नहीं करता. एनी मॉडर्न सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन see Tara as the wisdom that appears in those moments of uncertainty. Not a voice that gives answer, but an awareness that teaches us how to live without certainty. And whatever we approach Ma Tara through Shakt Tantra, comparative religion, philosophy or symbolic psychology, she remains one of the deepest experience of the divine feminine. For some, she is the divine mother. For others, she is the symbol of awakened consciousness. Perhaps both are attempts to understand the same infinite mystery. Because Ma Tara does not promise a life without darkness,
She teaches the wisdom to walk through darkness without losing yourself. This is the Matara.